Just 1 minute. I will see if I have space in the earlier file. Just one. Do I have a space over here? No, I don't have space. So, ठीक है. We'll write it in a new file. So now we have to, before dipole moment, now we have to do one small topic that will wind up today only. And that concept is called as bond parameter. क्या बोलना है मैडम उसे हम bond parameters बोलेंगे. Like what are the parameters of a bond? So the different bond parameters are bond angle होता है, bond length होता है, bond enthalpy होता है, okay, and bond order भी होता है. So let's take the first, bond parameter, that is bond angle. So the first they say that जो bond angle होता है ना, bond angle, BA stands for bond angle. So that is directly proportional to percentage S character. More the percentage of S character, more will be the bond angle. So suppose if I give you one example, the first example will be of say BeCl2. या for example BeF2 दे दिया, BF3 दे दिया और मीथेन दे दिया. ठीक है. तो BeF2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा पता है आपको? It will be 50% because it is sp hybridization. Remember we had done percentage s character in our last section. Okay, BF3 में hybridization sp3 होता है तो 33.33 होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, और मीथेन में sp3 होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो रहेगा वो 25% रहेगा. तो किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? तो बोलेगा सर BeF2 में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, BeF2 में वो 180 डिग्री होता है. ओके, BF3 में 120 होता है और यहाँ पे 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होता है. तो यू विल से दैट BF2 का बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन BF3 ग्रेटर देन CH4. समझाइए आपको? ओके. Now the second factor on which the bond angle depends. It says that bond angle is inversely proportional to lone pair. More the lone pair, more will be the bond angle. So example over here will be say methane. आपने मीथेन ले लिया, आपने अमोनिया ले लिया और आपने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया. सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, इसमें सॉरी 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर और इसमें 2 लोन पेयर. तो अगर आप बॉन्ड एंगल्स भी देखोगे, if you check the bond angles, so the bond angles over here are 109 degree and 28 minutes, 107 degree and 18 minutes, 104 degree and 5 minutes. तो जहाँ पे लोन पेयर कम है वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है सेंट्रल एटम पर. समझाइए? अंडरस्टूड मैडम? Yes, sir. Okay. Now the third factor, they say that bond angle is directly proportional to En. You know what is En, madam? What is En? Electronegativity. Electronegativity of central atom. CS stands for central atom. मम्मी मित्तल दीजिए है central atom.
So if you carefully check, suppose if I give you NH3, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. So this will be the bond angle. Uh, because आप ये समझ जाओ, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन phosphorus, more electronegative than arsenic, antimony, and bismuth. Similarly, similarly, if I give you H2O, H2S, selenium, selenium, and polonium. So here oxygen is more electronegative than sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Okay, so this will be the order of bond angle. Okay. Now the fourth factor on which the bond angle depends, that is electronegativity of side atom. It depends on electronegativity of side atom. Is inversely proportional to electronegativity of side atom. And what are the examples? You have COF2, COCl2, COBr2. Whose electronegativity is less, madam, in case of halogen? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? Um, आयोडीन का ना मैडम. क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम. ऐसे याद रखो आप. ठीक है. फिर और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ इसमें. SOF2, SOCl2, SOBr2 एंड SOI2. तो यहाँ पे आयोडीन का नेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा. और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो SF2, SCl2, SBr2, SI2. ऐसा. बिकॉज आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होता है. समझ में आया ये? And there is one more example, OF2, OCl2, OBr2 and OI2. ठीक है. समझा ये आपको? Okay. Now, based on this, there are certain exceptions. You know that wherever there is chemistry, there are always exceptions, right? So there are some unique cases that we have to do. They say that the bond angle of Cl2O is greater than that of H2O. See, chlorine is more electronegative than uh, hydrogen. Okay, so its bond angle should be less, but here it is greater. It is because of larger size of chlorine. Similarly, in ethers also, if you check this ether, C2H5O, this is called diethyl ether. Its bond angle is greater than dimethyl ether, and its bond angle is greater than water. You need to know these exceptions, which are some unique features. Okay. Now, based on this, there are certain exceptions. You know that wherever there is chemistry, there are always exceptions. So there are some unique cases that we have to do. They say that the bond angle of Cl2O is greater than that of H2O. See, chlorine is more electronegative than hydrogen. Okay, so it is because of larger size of chlorine. Similarly, in ethers also, if you check this ether, C2H5O, this is called diethyl ether. Its bond angle is greater than dimethyl ether, and its bond angle is greater than water. You need to know these exceptions,
Got it, madam? Yes, sir. Okay. So this are the four parameters on which bond angle depends. It depends on percentage S character. It depends on it is inversely proportional to lone pair of electrons on central atom, directly proportional to electronegativity of side atom, and you will say that inversely proportional to lone pair. Got it? Understood, madam? Yes. Sir, can you scroll up? I want to Yes. write. Yeah. This one. Which factor you are writing? Last one. Okay. Okay. Done, sir. I wrote it. हाँ. Okay. Now the next bond parameter that we have to do. This was the first bond parameter. Now the second bond parameter is regarding the bond length. Okay, we'll talk about bond length. The bond length is the distance between the two nuclei of the atoms which are forming a bond. So this bond length BL, okay, is inversely proportional to electronegativity. The best example that I can give you is HI. आयोडीन का नेगेटिविटी ब्रोमीन से, क्लोरीन से और फ्लोरीन से ज्यादा है, तो HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बिकॉज नेगेटिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. गॉट इट मैडम? Then the second factor that you can say on which bond length is dependent, you will say that bond length is inversely proportional to bond order. बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको सी सिंगल बॉन्ड सी दूं, सी डबल बॉन्ड सी दूं, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी दे दूं, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कितना है. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स. तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है. बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है. एंड रिमेंबर दिस, सी सिंगल बॉन्ड सी मतलब अल्केन्स हुआ. तो अल्केन्स में बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 154 पिकोमीटर्स का होता है. अल्कीन्स में 132 से 134 पिकोमीटर्स का होता है. और यहाँ पे 120 पिकोमीटर्स का होता है. ठीक है. जो तीसरा फैक्टर है. Bond order is just the number of bonds, right? यस. So suppose if I ask you this one, you have to tell me what is the bond of order of rhenium over here. Tell me. 4. 4. Fantastic. So it just represents total number of bonds between the two atoms. Okay. Mm. Sure. अब next वाला देखो, the last factor on which the bond length depends. So you will say that sir bond length जो है, okay, bond length is inversely proportional to percentage S character. मतलब जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा. तो लाइक इट्स एग्जांपल इज सी सिंगल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, एंड देन यू हैव सी ट्रिपल बॉन्ड एन लाइक दिस. ऐसा. ठीक है. तो सी सिंगल बॉन्ड
एन, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर मैं देखूं, सिंगल बॉन्ड्स में कितना होता है 25%, डबल बॉन्ड में क्या होता है 33.33%, और इसमें क्या होता है 50%। समझाइए। गुड। समझाइए मैडम। Yes, sir. ओके, तो नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर जो हमें पढ़ना है, ओके, वो है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स। तो बॉन्ड एंथैल्पी इज डिपेंडेंट ऑन सिक्स फैक्टर्स। फर्स्ट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एच एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बताइए। Um, Chlorine. लो, तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगा या बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा, ठीक है। देन द सेकेंड फैक्टर ऑन विच द बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। So you will say that bond enthalpy is directly proportional to bond polarity, मतलब वही हुआ कि जिसका नेगेटिविटी ज्यादा है उसका। तो अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी पूछो, Mm. इसका ज्यादा है। समझाइए। Yes, sir. जो तीसरा फैक्टर है, थर्ड फैक्टर, इज परसेंटेज एज कैरेक्टर। तो मोर द percentage as character, more is the bond enthalpy. So again, you can take this example: single bond N, double bond N, and a triple bond N, ऐसा। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले में परसेंटेज एज कैरेक्टर जो है वो कितना रहेगा पता है आपको, 25%। डबल बॉन्ड है तो अभी लिखा ना ऊपर 33.33%, ट्रिपल बॉन्ड में 50%। तो बॉन्ड एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। मोर द परसेंटेज एज कैरेक्टर, मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। Mm. जा रहा है दिमाग में, इजी है ये सब। देन दे से दैट बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। मतलब वो रेजोनेंस करके एक टॉपिक है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। बट आपको पता है ना बेंजीन में रेजोनेंस होता है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट लाइक दिस। तो बेंजीन का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा होगा। सी दिस इज बेंजीन, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, वो सर्कल से बताया ना मैंने, Mm. उसका बॉन्ड एंथैल्पी इससे ज्यादा होगा। समझाइए। Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट वाला देखो कि ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बॉन्ड ऑर्डर से भी ज्यादा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा बॉन्ड दो एटम्स के बीच में, उतना ही उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। और ये बट ऑब्वियस है समझने के लिए, बिकॉज यू विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक द, ठीक है। तो लाइक यू हैव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बताओ, 1, One, 2। two, three. तो यू विल से दैट ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर डन, एक, दो, देन थ्री, फोर, फाइव। एक लोन पेयर वाला भी था, रुको एक मिनट। Mm. हाँ, तो Mm. we'll say that bond enthalpy
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो अगर मैंने ऐसा कुछ दे दिया तो फ्लोरीन में कितना लोन पेयर रहता है? 3। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर रहता है। कार्बन में तो कोई लोन पेयर होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा। और एक फैक्टर होता है लास्ट वाला, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, बट एक मिनट। हाँ, एक तो लाएगी। हाँ, लाएगी। थैंक यू। ओके, बट अगर आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो क्लोरीन का वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। ये ट्रेंड आपको याद रखना है। दिस इज रिगार्डिंग द बॉन्ड एंथैल्पी। फ्लोरीन में वो इतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है ना, इवन दो इट इज साइज इज स्मॉल, its bond enthalpy is very less. Why it is very less? It is because of a very simple reason, that there is lot of repulsion, so which makes the molecule highly unstable. If the molecule is unstable, it is going to break anyhow. So 7 factors are there for bond enthalpy. First is electronegativity, then bond polarity, then percentage S character, then resonance, then bond order, then lone pair. All of them are directly proportional, whereas the last factor is मतलब bond enthalpy is inversely proportional to size. लिख लिया ये? I have to write. Okay, from where? From starting you have to write? No, the last two. Okay, okay, please write it down. This is an exception, huh? Please remember this. Last wala example, because you know that the atomic size of fluorine is very less, so actually as per the order fluorine का bond enthalpy सबसे ज्यादा होना चाहिए था, but then experimentally it is found that फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पे फ्लोरीन में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, आई विल राइट इट डाउन ओवर, इट इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसका बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल, so it does not require large energy to break the bonds. Inter electronic repulsion. ठीक है। Done. समझाइए। ओके, ओके। तो this is it for today, madam. We close for the day. This bond parameters is a very small topic. इसमें सिर्फ एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आई विल गिव यू अ रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड ऑल। सपोज बॉन्ड लेंथ जो है, ओके, वो किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड ऑर्डर का तो मैंने बता दिया। आप ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ओके, एंड जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, विच मीन्स दैट बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, वो तो मैंने लिखा ही था। ओके, एंड रिमेंबर दिस बॉन्ड एंथैल्पी
is also directly proportional to bond strength. BS मतलब bond strength हुआ. Got it, madam? Bond strength. ये मतलब कुछ बेसिक ऐसे रूल्स बनाए मैंने, वो आपको सिर्फ याद रखना है. एनीवे दे आर कवर्ड इन द एग्जाम्पल्स, बट ठीक है, याद रखोगे तो बेटर है ये. ठीक है. Yes, sir. So this is it for today. When we meet next time, we will do dipole moment. Okay, Yes. so there are only two topics remaining in this chapter now. One is dipole moment, and the another one is molecular orbital theory. Got it? And then we will be done with this chapter. Mm. Okay. So when we meet next time, we'll uh, do dipole moment. Do this topic thoroughly. Vesper table जो हमने किया ना, I will share you today's notes. Just save all the notes that I'm sharing it on the group in your phone properly, so that whenever you want to view them, it shouldn't happen that you are searching for it and you are not getting it. So you can store it in your laptop. You can make one folder under the name of the chapter, that is chemical bonding, and you can store all the video recordings and all the lecture notes in that folder. So whenever you want to study, you just have to click on that folder and you will get all the material in front of you. Yes, sir. Okay. So just like yesterday, please share the recordings of the today's session also. Mm. Okay. ठीक है? Yes. You understood that, madam? Yes, sir. I understand. Okay. Do it. Revise it. Revise hybridization. Revise Vesper. Revise this bond parameters. Mm. Let me know if you have any doubts, any difficulties. Okay, sir. Got it? Okay. Chalo. So I think we are good to close for the day. Very, very happy Diwali and a prosperous New Year to you and your family. Thank you, sir. Okay. I wish that after 2 years, when I wish you happy Diwali, you are in the best medical college of India. Thank you, sir. Okay. Thank you very much, sir. Okay.